तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स कंसेप्शन ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। तो इसमें हम क्या ये करते कि Yes. पहले तो बताते कि उसके अकॉर्डिंग क्लास क्या थी। तो उसके अकॉर्डिंग था क्लास के एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्लास बनती है। तो फिर हम डिफाइन करते दो टाइप्स में उसे, कि एक थे हैव्स, एक हैव्स नॉट। और हैव वो जिनके पास ऑनरशिप है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का, हैव नॉट जिनके पास नहीं है। उसके बाद फिर ये बताते कि उसने क्लास इन इटसेल्फ किसको बोला था, फिर क्लास फॉर इटसेल्फ किसको बोला था, और वो ट्रांजिशन कब होगा, जब वो स्ट्रगल हो रही होगी उनके बीच में, तो वो क्लास फॉर इटसेल्फ में चेंज होंगे। फिर वो रियलाइज करेंगे दैट द कॉज ऑफ रियल सफरिंग इज द कैपिटलिज्म। तो वो क्लास फॉर Exactly. इटसेल्फ। And also class in itself may you would mention about the false consciousness you are having, है ना? You don't know कि how capitalists are exploiting you. So in that basically you just be mentioning that people are not as conscious as they should be. So because of that, no, there would be evolution of the struggle phase, and then they will go for the class for itself, where they would be developing the true consciousness and why the capitalist class is exploiting them, and how they can just come out of that depressed and distressed phase, right? यस मैम, इसमें एक वो वाला वर्ड भी डाल सकते हैं ना कि क्लास इन इटसेल्फ में देयर इज नो सब्जेक्टिव अवेयरनेस, बट क्लास फॉर इटसेल्फ में Exactly. सब्जेक्टिव अवेयरनेस आ जाता है रिगार्डिंग कैपिटलिज्म। हाँ, यस, और क्लास इन इटसेल्फ में तो ऑब्जेक्टिवनेस है बस ना, दे आर वर्किंग बट दे डोंट नो कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ कैसे और क्यों। दे आर जस्ट कंसिडरिंग कि ठीक है, वी आर द वर्कर्स एंड वी आर मेड फॉर दिस ओनली, सो बिकॉज ऑफ दैट they are being exploited. But once they discover the truth, है ना, the truth behind all those miseries which they are having, they would go for the evolving phase, and then वो class for itself आ जाएगा। उसमें फिर दे विल डेवलप द कॉन्शियसनेस कि ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टैंड फॉर आवर ऑन राइट्स। सो एक बार देख लेते हैं इसमें आंसर में भी क्या, एक बार रीड कर देते हैं जल्दी से, स्पर्श आप पढ़ दो इसे। हाँ, क्लास इसमें लिखा है कार्ल मार्क्स डिफाइन क्लास इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल ओवर मींस ऑफ प्रोडक्ट। तो दो टाइप से डिफाइन किया है क्लास को, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया एबिलिटी फॉर क्लास स्ट्रगल, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सिमिलर कंट्रोल ओवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें इन्होंने ऐसा रिमार्क भी डाल रखा है कि हैव और हैव नॉट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, डायरेक्टली लिख दिया। फिर अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम कैपिटलिस्ट आर द डोमिनेटिंग क्लास हु एक्सप्लॉइट्स द वर्किंग क्लास when those working class are not aware about mechanism of the exploitation and the exploiter, but they share the common and same control over forces of production. This is called class in itself. हाँ, इन्होंने इसमें वो वाला वर्ड नहीं बताया जो मेन था, फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है। एग्जैक्टली, बस उसमें उन्होंने ये भी mention कर दिया कि वर्किंग क्लास जो है वो अवेयर नहीं है एक्सप्लॉइटेशन, मतलब वो मोर और लेस फॉल्स कॉन्शियसनेस से थोड़ा इजी हो जाता। बट ठीक है, नो इश्यूज, आगे क्या है? कीवर्ड्स थोड़े डाले हैं। फिर द कैपिटलिस्ट क्लास डोंट यूज naked for exploitation, but use coercion in an hidden manner using economic instruments and by infusion false So, ideology in superstructure with globalization and intense exploitation of workers under general law of capitalist accumulation, workers get awareness about their common enemy. This leads to homogenization of workers and gives birth to the class for itself. This class for itself revolt against capitalist system and socialism and communism will finally, ये क्या लिखा है? Usher finally.
क्लास इन इटसेल्फ का होमोजेनाइजेशन हो जाएगा, तो फिर वो क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएंगे. तो hence Mark advocated with subjective understanding of the exploitation, the workers group convert from class in itself to class for itself. एंड ये जो बीच में इन्होंने डायग्राम बनाया ना क्लास इन इटसेल्फ से कैसे ट्रांजिशन होगा इटसेल्फ का, सो दे आर शोइंग कि इफ देयर वुड बी ग्लोबलाइजेशन तो मोर एंड मोर लिंकेज ऑफ द कैपिटल एंड लेबर वुड बी देयर. तो जैसे जैसे लेबर्स एक दूसरे से मिलेंगे देयर वुड बी ट्रेड यूनियंस एंड मोर ओवर जो उनके बीच का कॉन्टेक्ट होगा दैट विल बी इंक्रीज एंड जो गैप होगा वो कम हो जाएगा. तो उससे अवेयरनेस ज्यादा बढ़ेगी उनमें आपस में ना. एंड जो एक्सप्लॉइटेशन है वो इंटेंस होगा पहले फेज में when there would be false consciousness, but once they develop the consciousness तो उसके बाद में जो एक्सप्लॉइटेशन है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. खत्म तो होना इज लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग, बट यस इट वुड बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट. करेक्ट है, मतलब इनके में थोड़े से कीवर्ड्स और डाल सकते थे, जैसे होमोजेनाइजेशन, पॉपराइजेशन, पोलराइजेशन, ये इस टाइप के करके. Exactly. Okay, one more question is there, no? That Weberian bureaucracy. Let us discuss that as well. तो इसमें क्वेश्चन है, एग्जामिन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी. What was Weber's assessment of the increasing bureaucratization of modern societies? Okay, so just explain the Weberian bureaucracy first, their features, and what was the Weber's assessment of increasing bureaucracy. So yes, bureaucratization है वो कैसे increase हुआ? Means here you have to mention about the contemporariness of that. Okay, let us start. View, just share your views, Parsh, over this question. हम फीचर पहले वही वेबर का बता देते कि उनके लिए ब्यूरोक्रेसी प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरी स्ट्रक्चर, लाइक फैमिली, रिलीजन, हर जगह ब्यूरोक्रेसी प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग. और फिर उसके फीचर्स बता देते कि बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे हायरार्की होती है और वो मेरिटोक्रेसी होती है, और कौन कौन से फीचर्स थे. हाँ, there would be training later on. ठीक है, उससे पहले you should just clear the examination, so वो meritocracy वाला base आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद में there would be code of conduct that you should follow. There would be remuneration fixation होगा that cannot be reduced during your term. है ना. एंड फिर उसके बाद में कि वो केज वाला भी इन्होंने मेंशन किया था ना, आयरन केज. तो वो तो इन लास्ट यू कैन मेंशन एज अ क्रिटिक एज वेल कि once you go in the bureaucracy, so you feel yourself like pegged in a iron cage, also called as iron cage bureaucracy. Okay, एक बार इनका आंसर भी चेक कर लेते क्या मेंशन है इसमें. Weber analyzed the concept of bureaucracy through the paradigm of his ideal type. According to Weber, with modernization, rationalization will dominate in the society. Rational bureaucracy will emerge from this process of rationalization. Salient features of Weberian bureaucracy. Weber formed the ideal type of bureaucracy. Bureaucracy is an organization where activities are rationally defined to achieve the predefined goal of organization. Clear-cut hierarchy is there where there is a chain of command. Rational system of selection of bureaucrats based on qualifications and merit. Each bureaucratic office has specific tasks to perform and has expertise in that. Example, income tax department work for taxation and involves expertise. The process and activities of bureaucracy works under written legal codes and rules. Bureaucrats work for bureaucracy as a vocation. Bureaucrats do not usurp the power or position the bureaucracy. It has benefits of calculability,
efficient and predictability in working. Rational bureaucracy is the most efficient organization for the rational society, hence it can't call it deviance and ritualism. Criticism and other views on bureaucracy. तो फिर वेट अ इन्होंने मिनट, जैसे जो सैलरी फीचर्स वाला फेज है, ठीक है, दैट वुड बी इजी टू अप्रोच इफ यू जस्ट गो फ्रॉम द स्टार्टिंग. फॉर एग्जांपल, एज ऑफ नाउ यू आर डूइंग हार्ड वर्क टू गेट इनटू द सर्विसेज, and the UPSC would be selecting it on the merit base. Once you get into the services, what are your responsibility? You should be confident enough. All those foundational values which one civil servant should have, that you should be having those qualities. After that, once you get into the hostel phase, like no labasna or foundation phase, then what are your points? Like training hona chahiye, theek hai. फिर ट्रेनिंग के बाद में यू शुड बी लर्निंग सो मेनी थिंग्स, सो यू शुड बी नो राइट टू टेक द challenges. You should not feel that there are much things which you have to learn, so that should act as a responsibilities, no, what we call as a call of duty. So you should take it on that lines. Then once you get into the post as well, no, तो post के बाद में जो आपके remunerations होंगे, that would be fixed. If you are on a confidential position, so it is your duty that you मेंटेन द सिक्रेसी देयर, ठीक है. एंड उसके बाद में ऑल्सो मेरिट बेसिस पे आपकी जो ना सीनियोरिटी डिसाइड की जाती है. सो दैट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द सीनियोरिटी. सो दिस इज हाउ द वेबर जस्ट ड्रॉ लाइक नो ड्राइव ऑल दोस आइडल टाइप्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, कि अगर ब्यूरोक्रेसी है तो उसके आइडल टाइप क्या क्या होंगे. जस्ट कीप इन दैट मैनर ना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा. हाँ यस मैम, इन्होंने रेशनल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही फोकस कर दिया. उन्होंने बेसिक फीचर्स पूछे सेक्शन थे. में रियलाइजेशन वर्ड को 3-4 भाई यूज करती है, तो थोड़ा इशू है वो भी. यस. तो फिर नेक्स्ट इन्होंने क्रिटिसिज्म एंड अदर व्यूज बताए ब्यूरोक्रेसी पे. तो बर्न्स एंड स्टॉकर आर्ग्यू दैट ब्यूरोक्रेसी इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज. Industries which require flexibility are not suited for rigid bureaucracy. Similarly, Alvin Gardner, in his study of gypsum mines in USA, argued that presence of bureaucracy hampered the productivity in the gypsum mines. They have Marxists like Bowles and Gintis suggest that bureaucracy in organization is used to maintain domination over the working class. Hence, Weber made it ideal type of bureaucracy by characterizing it. He suggested that it is the most efficient organization of social work. However, he was also aware about the downfall and negatives of bureaucracy. फिर है BSK. Weber calls this iron cage of rationality. So, Weber's views on increasing bureaucratization. According to Weber, bureaucracy has the benefit of being most efficient organization for modern society. It can fulfill the need of capitalism by providing rational organization for performing tasks. However, Weber had some apprehensions about increasing bureaucracy. Red tapeism, iron cage of rationality, which society can't escape. It produces experts without social and emotionality. It can lead to disenchantment and alienation. Rigid norms and rules can hamper achievement of goals. By R.K. Martin. And also, like, no, when you are in the bureaucracy, so you have to follow a hierarchy. If you want to take decision on your own, or if you want to take any incentive to go for a new decision, you can't go. You have to get like no approval from the seniors. So that also like no cause the red tapeism, or that will also be the delay of the project. So like no, that also kills your motivation to do something coming out of your own comfort zone. So ये भी है, इसी वजह से वो आयरन केज बोला गया है कि आप उसमें एक ना बंद गए हैं, एंड यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ योर ओन डिसीजंस, है ना. आई गेस हो गया कि ये भी आंसर है. इसमें भी कोई पेजेस पेंडिंग है पीडीएफ में, मतलब इसमें जो हो पेजेस में. हाँ ये हो गया. इसमें मैम जो इन्होंने जैसे क्वेश्चन दिया था, तो उसमें 2 पार्ट्स थे. तो इन्होंने जो दूसरा पार्ट था उसको एक ही पेज दिया.
पहले वाले पार्ट को सेलिएंट फीचर्स में क्रिटिसिज्म वगैरह डाल के उसे 3 पेज बना दिया, तो ये भी थोड़ा गलत है क्या? वो उसमें ना जैसे जो फर्स्ट पेज था ना जहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन, इन्होंने पॉइंट्स तो बहुत अच्छे दिए थे, जो लाइन फीचर्स के अंदर पॉइंट्स है ना वो तो काफी अच्छे हैं, यू कैन जस्ट कॉपी इट। बट इन्होंने क्या किया ना, वो डेफिनेशन पार्ट वाला जो है उसमें लाइक ना थोड़े से रेशनलाइजेशन को लेके पॉइंट ज्यादा डाल दिए, तो उस वजह से क्या वो सेलेंट फीचर्स को भी उन्होंने फिर और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। बट ऑल्सो इसलिए 4 पेजेस अलॉटेड है ना, 250 वर्ड्स वाला आंसर है, तो ऐसा जितना इशू नहीं है, सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से फोकस करना इंपॉर्टेंट था। ये 150 वर्ड्स का नहीं है, 250 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है ये, तो इस वजह से ना फिर सब कुछ लिखना था इसमें। यू कैन सी 4 पेजेस आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस आंसर। तो हाँ, फॉर एग्जांपल अगर 15 में आता तो व्हाट यू कुड हैव डन इज जस्ट गिव द डेफिनेशन, उसके बाद में 4 या 5 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर द फीचर्स। फीचर्स के बाद में क्रिटिसिज्म क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो यू कैन जस्ट मूव टू नेक्स्ट हेडिंग, वो जो थी कि वेबर ने आज के ब्यूरोक्रेटाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन किया, उसके 5 पॉइंट्स, एंड देन जस्ट प्रोवाइड अ पॉजिटिव एंड गुड लाइक नो कंक्लूडिंग पैरा टू योर आंसर, सो दैट इज इट। बट वही है ना, Okay. क्वेश्चन की लेंथ अच्छे से कवर करनी पड़ती है, अगर 250 होते तो ठीक है, जस्टिस तो कर दिया आंसर जैसा। हाँ, कीवर्ड्स का थोड़ा सा हो सकता है, तो वो तो बाय द टाइम यू वुड बी रीडिंग योर स्टफ नो, सो यू कैन जस्ट टिक मार्क सम ऑफ द पॉइंट्स। यस मैम। ओके स्पर्श, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग को आप क्लोज कर दो।